Hello students, how are you? I hope you all are pretty good. I'm also pretty good. So today we will do our next topic, Precis writing, but before that we will do some idioms also. So it is the ball is in your court. The ball is in your court. The ball is in your court. Very good. What do you mean by? Yes, the ball is in your court means your chance or someone else turn to make a move. मतलब किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी होना अब. Yes, someone else to someone else turn to make a move. किसी और का उत्तरदायित्व होना, किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी होना. I told my boss that if he doesn't pay me more money, I'll leave. Now the ball is in your court now. मतलब अगर आप मुझे और ज़्यादा मनी नहीं दोगे, ज़्यादा पैसे नहीं दोगे तो मैं जॉब छोड़ दूँगा. I will leave. Now the ball is in your court. अब आपकी मर्जी, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप किस साइड डिसीजन ले. Ball is in your court. Next is whole 9 yards. Whole 9 yards. Whole 9 yards means all of it, everything. Yes, whole 9 yards, all of it, everything that is possible. Everything as far as possible. Okay, everything that is possible. Sorry, everything that is possible. Everything that is possible. The mountain trail was difficult, but I wanted to go the whole 9 yards as far as possible. मैं उतनी दूर तो जाना ही चाहता हूँ जितना कि possible है. Everything as far as possible. Okay. I will help you whole 9 yards. मैं तुम्हारी मदद करूँगा जितना as far as जितना possible है तब तक. That is. Next is keep something at bay. Keep something at bay. Keep something at bay. दूर रखना. To stop something that could be a problem for you from getting close or getting worse. Okay, means to stop something, उन चीज़ों को रोकना that जो आपके लिए problematic हो सकती हैं, या तो वो आपके करीब हैं या वो और बुरी हो सकती हैं. Okay, to stop something, to stop something. Yeah, I should take in my hand. This is to stop something is that could be a problem for you from getting close or getting worse. आपके करीब आने से वो और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं. अ गुड वे ऑफ कीपिंग योर एंग्जाइटीज एट बे इज़ टू मेडिटेट. अ गुड वे ऑफ कीपिंग योर एंग्जाइटीज़ को दूर करने का अपने से यही तरीका है कि मेडिटेट करो, मेडिटेशन करो. वेरी गुड आफ्टरनून. या नेक्स्ट इज एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट. एट द drop of a hat.
Yes. At the drop of a hat, immediately, abruptly. Yes, we can say abruptly, अचानक से, तुरंत, उसी समय. Don't let Namita watch those emotional serials. She cries at the drop of her hat. वो उसी time, abruptly, at the same time, immediately she will start crying. So at the drop of her hat, immediately, abruptly, instantly, उसी time. Next is a Herculean task. A Herculean task. Yes, a Herculean task is a difficult job. एक बहुत ही कठिन कार्य. Convincing my mother to let me go for a night stay is a Herculean task. Clearing CA exam is a Herculean task. Being an IAS officer is a Herculean task. So a difficult job, एक कठिन कार्य. It can be anything. A difficult job, एक कठिन कार्य, that is called a Herculean task. Next is gift of gap. Gift of gap. Yeah, what do you mean by here gift of gap? Speak fluently. Speak fluently, बोलने की कला. जो आर्ट ऑफ स्पीकिंग है, आर्ट ऑफ पावर है, वो होना. स्पीक फ्लुएंटली. स्पीक फ्लुएंटली, बोलने की कला में परफेक्ट होना. Our English teacher definitely has the gift of gap. The listener are in awe of his speech. Our English teacher definitely has the gift of gap. उनके पास ये बोलने की कला की पावर है, ये शक्ति है. ओके, जो लिसनर है आर इन, अब वो प्रभावित हो जाता है, वो सुनता ही रहता है उनकी स्पीच को. दिस इज कॉल्ड गिफ्ट ऑफ गैप. Okay, so the ball is in your court, someone else turn to make a move. Okay, किसी और के दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसी और को देना. whole 9 yards, everything that is possible, everything as far as possible, है ना. we can use this also, as far as, जहाँ तक, जितनी दूर तक. Keep something at bay to stop something that could be a problem for you from getting close or getting worse. जो problematic हो सकता है. At the drop of a hat, abruptly, immediately, on the spot, उसी time. A Herculean task, a difficult job, a difficult work, एक कठिन task, मुश्किल task. Gift of gap, speak fluently, बोलने की कला, बोलने की power. That is enough. चलिए, take out your next topic. Very good afternoon, students. Yes, that is precis writing. Precis, yeah, it is precis writing. So we have completed our comprehension passage, our note making, and today we will do precis writing. In note making also, it was a part that after making notes you have to write a summary. So precis writing is also something like that, summary precis writing. We have a lot of similarities, little bit difference. So while we do this, I will tell you the features of summary writing also. Firstly, yeah, open this. Yes, goals to enable learners. What's the goal of this precis writing? Why should we do this precis writing?
To apply the skills and strategies of a successful reader, to develop their critical thinking, reading and writing skill, learn condensing and synthesizing techniques, to develop a basic understanding of Precis writing and its nuances, उन्हें कैसे implement करना है. Okay, learning objective same. Firstly you have to skim, एक बार फटाफट से हमें ही पहरा पढ़ना होता है, टू आइडेंटिफाई द मेन आइडिया और थीम ऑफ टेक्स्ट, है ना. सबसे पहले स्किम करेंगे, देन स्कैन, लुक एट द ऑल पार्ट्स ऑफ टेक्स्ट केयरफुली फॉर डिटेल्स, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेन आइडियाज एंड supporting details, sift through the given material to identify the most important details, provide an appropriate title for the given information. Text देखिए इसमें title है, summary में no title. Write a precis of the given text in as few words as possible. As few words as possible, जितने कम शब्दों में हम उस बात को कह सकते हैं, so we should say in precis. Okay, introduction. A shortening of a text in one's own words is known as precis writing. Shortening, yeah, that is, है ना, is it show? Yeah, shortening, shortening of words, shortening of words, a shortening of text, shortening of text in one's own words. ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, one's own words, खुद के शब्दों में उसकी शॉर्टनिंग करनी है, दैट इज कॉल्ड precis writing. The term is derived from the French words précis, precise. The precis gives an accurate and concise description of the substance of the main idea. Actually, that is, it's nothing that, since it insists economy of words, you can learn to choose. Okay, precis writing, shortening of words in your, shortening of text in your own words, but same sequence we have to follow. Okay, like difference between precis and summary. Usually the word summary is used loosely to refer to precis. Loosely to refer precis. There are subtle differences between them. Subtle होता है छोटे छोटे, small, little bit, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े differences नहीं है, लगभग summary और precis एक ही जैसा है, कुछ एक differences हैं. The first and the most important difference is that a precis is a brief statement of a piece of writing such as a report, article or chapter from a book. आपको किसी बुक में से कोई आर्टिकल दे देंगे, कोई चैप्टर दे देंगे, कोई रिपोर्ट दे देंगे. Whereas summary is short account of longer pieces of work such as a thesis or a novel. Yes, पूरा नॉवल है, उसकी समरी बनानी है ना. थीसिस है, उसका एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट थीसिस है, उसका एब्स्ट्रैक्ट या उसकी समरी बनानी है, दैट इज कॉल्ड समरी राइटिंग. ओके, पूरी बुक है, पूरा नॉवल है, उसका निचोड़ समरी है, और पूरी बुक में से कोई एक चैप्टर, कोई एक आर्टिकल, एनी कॉन्टेक्स्ट, दैट इज कॉल्ड precis. उसका हमें precis बनाना है. तो समरी जिसकी बन रही है, दैट कंडेंस्ड इज बिग वन, कॉन्टेक्स्ट वो प्रॉपर है, और precis इज द पार्ट ऑफ दैट. सेकेंडली, द precis फॉलोज द ऑर्डर एंड proportion of the material in the original, whereas the writer of the summary is free to change the order and proportion if he wishes to do. देखिए, secondly the precis follows the order and proportion. जो precis में we have to follow the same sequence that is given in the context. पहले उसके बारे में, फिर उसके बारे में, फिर उसके बारे में, we have to follow the same sequence. But in summary, no, you just have go through, and when you are writing, so you are a writer can change the little bit sequence according to him, क्योंकि पूरा निचोड़ निकालना है. It's a big one. Another important difference between the two is that the precis states only the thought of the original text, whereas the writer of the summary is free to interpret the material and to comment on it. देखिए, precis में you cannot change anything, you can't give your own ideas in original text, but writer in summary you are free to little bit interpret that the material.
Okay, so it's a subtle difference, subtle, बिल्कुल छोटे छोटे differences है, ना के बराबर. What are the qualities of a good Precis? हाँ, quality of a good Precis. So clarity. Clarity. It is essential that the ideas presented in the Precis should be clear and comprehensible. Idea clear होना चाहिए. By using simple language and structures, the writer can assure that there is no ambiguity. Means कोई confusion नहीं होना चाहिए. बड़ी simple सी language में आपको अपनी बात को कहते जाना है. Next is objectivity. Yes, objectivity. The writer must have an objective approach. He should be able to write a Precis that is unbiased and purely a summary of the original text. क्योंकि हमारा main object तो वही है ना, purely on the original text, उसी पर base हो. Correctness. Correctness. The writer must ensure that not just the facts but also the grammar and sentences are without flaws. Such error can obscure the meaning of the message. No grammatical mistake, no sentence structure mistake should be there, because if you do, then meaning would be changed, message would be distract. Coherence. Yes, coherence. A good Precis should be coherent. The ideas must be presented in a way that shows the connection clearly. That logical connected होनी चाहिए. जो हमारा main idea लेकर चल रहे हैं वो एक दूसरे से coherent होने चाहिए, interrelated होने चाहिए. Completeness. Completeness. The writer should include all the important facts from the text in the Precis. No important fact can be omitted to make the summary short. ये नहीं कि हमें सिर्फ 1/3 बनाना है तो I can just omit the important fact. अपने ऐसे नहीं कुछ भी आप omit करते जा रहे हैं, हटाते जा रहे हैं so that I can short this. No, you are not to do like this. Next is conciseness. Conciseness, sorry. Conciseness, is it? Okay. Conciseness is a desirable quality of a good Precis. A piece of writing is considered concise if it conveys the message in the fewest possible words. By the writer shouldn't omit essential fact to achieve conciseness. वही सेम चीज़ें हैं कि उसको शॉर्ट करना है, मीनिंगफुल रहना चाहिए, इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट हैं, जो इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं, यू आर नॉट टू omit that. Okay, so we have to follow some facts here. मैं फटाफट से बताती हूँ. Step 1 है, देखिए, read the passage carefully more than once if so required. The first requirement of the writer is to understand the text well enough to extract its central main idea. फटाफट से टेक्स्ट को रीड किया, एक मेन आइडिया, एक अंडरस्टैंडिंग ये है किस बारे में ये टेक्स्ट. It's enough. Step 2. Decide what facts or ideas in the context are essential and what are of secondary or of no importance. It is good idea to underline the important terms and ideas. Like first we have came, एक बार हमने पढ़ा, सिर्फ हमें ये पता चला किसके बारे में है. After that we are reading again, so at least we can just underline. हाँ, ये बहुत important है, that is, ये थोड़ा थोड़ा important है और ये वैसे ही है, no importance, so no need to underline that. Number 3, select a suitable title for the proposed Precis. हमें उसका title ढूंढना है. Even when you read first paragraph, then also a title very much clear in our mind. Step 4, collect all the key points and prepare a first draft of the Precis, keeping in mind the need to reduce the original text to 1/3 its length. 1/3, Precis should be 1/3, summary should be 1/4. So firstly, this is the difference, this is the great huge difference between that. Summary should be 1/4, 25% of the whole
text, and Precis should be 1/3, 33% of the whole text. Yes, this you have to keep this thing in your mind, and when you are drafting your Precis, either Precis or summary, of course you have to count the words. You can count the words and lines, and you can multiply, so you can take out the total words, how many words we have used here, so that you would be able to do 1/3 or 1/4. Of course, yeah, this is the criteria, and we can't go beyond that criteria. The main thoughts expressed in the passage, the ideas it contains, the opinions presented, and the conclusion arrived at should be a part of the रफ ड्राफ्ट. हाँ देखिए, एकदम से थोड़ी ना हम फटाफट से लिख सकते हैं. वी हैव टू ड्रॉ रफ ड्राफ्ट, तो आप वहाँ पर ड्राफ्ट कर सकते हैं. यू हैव अ रफ पेज और एनीथिंग यू कैन मेक विद यू वर डूइंग कैलकुलेशन और एनीथिंग यू कैन डू रफ. और वैसे भी अगर हमने बनाया है वहाँ पर ड्राफ्ट और नहीं समझ आया, कुछ गलत हो गया, तो डोंट डू कटिंग, गिव इट दैट रफ ड्राफ्ट एंड दैट इज़ फाइनल ड्राफ्ट. तो कटिंग बिकॉज इट्स अ language one, writing skill, it is the part of that language, so you can't do cuttings and repetition of the words. It doesn't look good and it should be legible, so you can give a name to rough draft. Read the draft, it may so happen it is too long. Shorten it further if necessary by omitting anything which is not necessary to the central idea or by remodeling the sentence. देखो omit कर दो, जो sentence जो नहीं है जरूरी उसको omit कर दो, और remodeling मतलब उसको दोबारा से मॉडल करो, कुछ ऐसे sentences को frame करो. You should succeed in producing a good Precis by the second draft. मतलब एक बार में नहीं तो दूसरी बार में you would be successful. When you have made your second or final draft, carefully revise your Precis to ensure that you have the bare minimum of words necessary to express the idea of a passage. Check to make sure that the Precis has been written in words that are your own, not those of the author. As it is, उन लाइनों को उठाकर नहीं लिखना है. You read out, then you write in your own words. Again I am saying not in author word, in your own words. कुछ और पॉइंट्स हैं. Precis must not exceed 1/3 of the length. Identify the central idea and omit unnecessary detail. Eliminate wordy expression from the Precis. Avoid unnecessary repetition. Every Precis should have a short and appropriate title. It should be written in the words of the Precis writer. The main ideas of the original text should be presented in the same order in the Precis. Don't introduce ideas of your own in the Precis. Means I think, it is my opinion, according to me. No, you are not to give your own ideas. Your ideas are not invited in the Precis. Don't criticize or change the author ideas. Don't try to criticize what author has said. You have to write down in your own words only, but you can't change the fact or opinion. Don't write that. I don't agree with this point, or not like that. Always use a third person में यूज़ करना है, I और you में नहीं. Third person में people, things, he says, like that. Reported speech है ना, direct and indirect speech we have done earlier, so it should be reported speech, not direct speech, I or you, not inverted commas. It should be in reported speech. Of course, when we are just doing writing skills, so mostly we write in indirect speech. Reported speech I told you earlier also, in past tense while writing a Precis. Only universal truth should be written in the present tense. वो हमें पता है ना. When we change direct into indirect narration, you know very well that present में है ना universal truth, जो सच्चाई है, we were writing. Okay, so is it clear, students? We have discussed till now rules, objectives, points to remember, qualities of a good Precis. So please write in your chat box. Till here, is it clear for you?
एटलीस्ट एक हमारे माइंड में डिपिक्शन आया, एक हमारे माइंड में पिक्चर आई, व्हाट इज़ प्रेसी। आई नो दैट यू हैव डन ऑलरेडी इन योर लास्ट क्लासेस, योर स्कूल क्लासेस प्रेसी, बट again you were not familiar with the rules and regulations, and now it's a very reputed exam, so we can't forget these rules and regulations. So practice is also, yeah, it is also necessary, but little bit theoretical part it was necessary to keep this thing in our mind. अभी हमारे mind में है knot making क्या है, pressy क्या है, so we can use that, we can, okay. So here we go, we have the first one, बड़ा smaller one है, तो हम इसी से शुरू करते हैं. So students please read out 7.3 first one. Okay, I can read for you. I can read for you, yes. You also can read, because yeah, reading quickly, it will enhance your reading skill, और बहुत फ़ायदेमंद है अगर हमारी reading skill अच्छी हो जाती है. A life of action and danger, है ना, moderates the dread of death. Okay, चलिए आप read कीजिए within 2 minutes, then I will read out and I will tell you the meaning also. Okay, so you have 2 minutes, students. You just read out. Okay, very good. Okay, we should start. A life of action and danger moderates the dread of death. देखो, a life of action and danger, life of action and danger moderate क्या करती है, क्या बढ़ाती है, dread of death को, death के डर को. It not only gives us fortitude to bear pain, ये ना केवल हमें fortitude देती है, मतलब हिम्मत देती है, करेज देती है टू बेयर पेन, पेन को सहने का, बट ऑल्सो टीच अस एट एवरी स्टेप द प्रिकेरियस टेन्योर ऑन विच वी होल्ड आवर प्रेजेंट बीइंग. देखो, ये ना सिर्फ हमें हिम्मत देती है जो हमारी पेन है, जो दुख हैं उसको सहने का, बट हमें सिखाती भी है कि एवरी स्टेप अनसर्टेन टेन्योर ऑन विच वी होल्ड, क्योंकि प्रेजेंट में बहुत सारी चीज़ें अनसर्टेन है, एवरीथिंग इज़ अनसर्टेन, नथिंग इज़ सर्टेन. तो जो अनसर्टेन थिंग्स हैं उनको हम किस तरह से होल्ड करेंगे, वो सब चीज़ें हमें सिखाती है. सेडेंटरी एंड स्टूडियस मैन, ओके, sedentary and studious men are the most apprehensive on the score. तो सबसे ज़्यादा कौन है, sedentary, जो मोस्टली बैठे रहते हैं, spendly mostly time while sitting. studious man या फिर जो studious reading में रहते हैं वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं. डॉक्टर जॉनसन वॉज एन इंस्टेंस इन पॉइंट. अ फ्यू ईयर्स seemed to him soon over compared with those sweeping contemplation on time and infinity which he had been used to pose himself. In the still life of a man of letters, there was no obvious reason for change. अभी जो लाइफ है, देखिए अलग अलग पैटर्न है, अलग अलग तरीके से हम जी रहे हैं. मैन ऑफ लेटर्स, मतलब लेटर्स सारा दिन ये शब्दों में ही जिसकी ज़िंदगी रहती है, लिखना, पढ़ना, टाइप करना, तो उसके लिए तो चेंजिंग का कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है. ही माइट सिट इन एन आर्म चेयर, ही माइट सिट, है ना, माइट, वो क्या होगा, बैठा रहेगा अपनी आर्म चेयर पर, एंड पोर आउट कप ऑफ टी टू ऑल. एटर्निटी वुड इट हैड बिन पॉसिबल फॉर हिम टू डू सो. पोर आउट कप्स ऑफ टी, पोर आउट, उड़ेलता रहेगा अपने अंदर, है ना, वुड इट हैड बिन पॉसिबल फॉर हिम. The most rational cure after all for the inordinate fear of death is to set a just value on life. Rational cure logically क्या है, inordinate fear of death,
ह्यूज, बड़ा, सबसे बड़ा मौत का कारण ही उन लोगों के लिए है। इफ़ वी मेयर विश टू कंटिन्यू ऑन द सीन टू इंडल्ज अर हेडस्ट्रॉन्ग ह्यूमर एंड टॉर्मेंटिंग पैशन, है ना, ऑन द सीन टू इन्जॉय करना, हेडस्ट्रॉन्ग ह्यूमर जो मजाक है उन सबको इन्जॉय करना, और पैशन, टॉर्मेंटिंग क्या है, मेंटली एंड फिजिकली सफरिंग, जो शौक हैं जिससे आप सफ़र कर रहे हैं, पैशन, वी हैड बेटर टू गॉन एट वंस एंड इफ़ वी ओनली चेरिश अ फॉन्डनेस फॉर एग्जिस्टेंस अकॉर्डिंग टू द गुड वी डिज़ायर फ्रॉम इट, the pang we feel at parting which it will never be which it will not be very server। ठीक है, तो बहुत सारा इसमें लाइफ के बारे में बताया है, लाइफ की एक्टिवनेस, लाइफ की इनएक्टिवनेस, कौन से लोग इनएक्टिव हैं वाइल सिटिंग, डोंट वांट टू चेंज इन देयर लाइफस्टाइल, करेज नहीं है इसलिए वो डेथ से डर रहे हैं। ओके, सो सिर्फ एक यही तरीका है, अकॉर्डिंग टू द गुड वी डिज़ायर फ्रॉम इट, द पैंग मतलब जो उदासी है, जो सैडनेस है, वी फील एट पार्टिंग विच इट विल नेवर बी आवर सर्वर। ओके, आई होप यू रीड। चलिए एक स्टेप बाय स्टेप 6 स्टेप्स के अकॉर्डिंग जो हमें दिए गए थे वी जस्ट डू। सो स्टेप 1, दिस इज़ ओनली टू मेक यू अंडरस्टैंड, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं स्टेप लिख रही हूँ, हमें पैराग्राफ में देना है, बट it's a first one. So step 1, identify the main idea. The text discusses about क्या है main idea? Yes, write in chat box. Death and fear, very good. और बताइए, शाबाश। The fear of death, the dread of death, very good. Dread of death, very good. हाँ, डेथ्स फियर, टेरर ऑफ डेथ, बिल्कुल ठीक, शाबाश। फियर ऑफ डेथ, ड्रेड ऑफ डेथ, बिल्कुल। देखिए किसी भी तरह हम कह सक रहे हैं, है तो यही ना, मौत का डर। वी कैन से फियर ऑफ डेथ, वी कैन से पीपल्स फियर ऑफ डेथ, है ना, थर्ड पर्सन के लिए बोला जा रहा है, तो पीपल्स, लोगों का डर, फियर ऑफ डेथ। We can use here terror of death, we can use here dread of death, ठीक है। तो people's fear of death, people, लोगों का, it details why some people fear death। okay, step 2, identify the main points, facts, main points क्या निकल के आए हैं, या may I have your attention students? Yes, please, you just tell me some main points। शाबाश, 2, 3, 4, 5, 6, it's totally up to you. Take out some main points what we have in this text, but the sequence should be same. Yeah, students are typing, no problem. Yeah, very good. Yes, students, hurry up. Okay. Dheeraj Ahuja, cure set value on life. Okay. Cure set value on life. Okay. Fear of death is to set a just value of life. Those who are inactive fears death. Okay, those who are inactive fears death. People studying are the majority who are at verge of dread of death. People, okay, full of living activity doesn't fear it. People who fear from death spend a lot of time there sitting freely and thinking unnecessarily. A life of action creates fear of death. Cherish fondness
ऑफ लाइफ, हाँ एब्रीवेशन नहीं यूज़ करना है, इसमें शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करनी है। या फेयर if death are more in those people who spent more time in sitting and study. Okay, spelling mistakes पर ध्यान दीजिए, very good. Yeah, so you have to take out 4-5 points. We don't fear death if we live inactive life. Those people who keep studying and sitting fear death the most. This happen because they lead an inactive and peaceful life and they don't want any change. Most sensible way of ridding oneself of the fear of death is by valuing life. We should be comfortable with the knowledge that life is unpredictable and that our hold upon life is very uncertain. Yeah, very good students. You have to take out some points. Yeah, more points, give me more points, more points. Yeah, in the starting देखिए step 1 क्या था, हमारा मेन आइडिया था कि किस किस बारे में है, लोगों का डेथ के बारे में ही है. ओके, step 2, what was step 2? We have just taken out some points. We have just taken out 1, 2, 3, 4, 5, 6 points. हमने लिख दिए. Okay. After that we have step 3. We have step 3. What is step 3? The suitable title. The fear of death, the terror of death, the dread of death. कुछ भी आ सकता है, बिल्कुल. The dread of death we can write down here. The dread of death, the fear of death, the terror of death. We can use any one here. Okay. Step 4, write the first draft. Yeah. उसके बाद step 4, 5 and 6 है ना, हम होते हुए 4, 5, 6 पर पहुँचेंगे. So you have to read out. अच्छा, how many words are in this? Count please students. How many words? अभी कैसे count करेंगे? You have to count the lines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, 9, 10 like that. And words 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Near about, huh? Near about this. We have 170 or 180 words, so we have to do the 1/3 and we have to write this. Yeah, 180, 200. No, we don't count articles and prepositions. 230 तक नहीं पहुंचाना है, ये articles को नहीं बीच में count किया जाता है, so we are not to count. Okay, and the 1/3 of this, students, 1/3 of this, yeah, mathematics students, do quickly. एक हमें आइडिया लेना होगा एवरी पैसेज. 1/3 ऑफ दिस 60. ठीक है. ओके, 60. तो इन विद इन 4 or 5 लाइन्स वी हैव टू समराइज दिस. ठीक है. ओके, 65, 60 to 70 है ना मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स. सो चलिए देखिए इसमें जो फाइनल ड्राफ्ट है क्या निकल के आ रहा है. आई जस्ट write the final draft. The fear of death. If we lead an inactive life facing dangers, अभी कॉमा लगा दिया, we will fear death less. They summarized. If we lead an inactive life facing dangers, we will feel death less. People who lead a lazy and peaceful life, अब इसमें वो सब आ गए, वो मैन ऑफ लेटर्स और वो सब. लेजी एंड पीसफुल लाइफ, वो कप चाय वाला. फियर चेंज एंड आर मोस्ट अफ्रेड ऑफ डेथ. देखो 2 लाइनों में कितनी बात कह दी. इफ़ वी लीड एन इनएक्टिव लाइफ फेसिंग डेंजर्स, वी विल फियर डेथ लेस. People who lead a lazy and peaceful life fear change and are most afraid of death. The most sensible way of getting rid of the fear of death is to value life properly.
If we don't give unnecessary importance to our life, we will not feel the pang of death. We will not feel the pang of death. We will not feel the sadness of death. किसी भी तरह हम उसे change कर सकते हैं. So we have made the little bit long sentence. We put the comma and we okay. Our mathematical students 66.66. अभी इंग्लिश में इतना हार्ड एंड फास्ट कैसे करोगे? 66.66. आइदर टेक 66 वर्ड्स और 67 वर्ड्स. इतना ज़्यादा इसमें नहीं, यू हैव टू वेस्ट योर टाइम. इसी कैलकुलेशन में नहीं लगाना है. पैसिव राइटिंग में कि मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स हैं, काउंट एक ओवरऑल व्यू लेना होता है. अप्रॉक्सीमेट कि उससे ज़्यादा नहीं होना, उससे बहुत ज़्यादा कम नहीं होना, है ना स्टूडेंट्स. दे हैव गिवन, इतने सारे बच्चों ने सारी कैलकुलेशन निकाल के वर्ड्स की रख दी है. इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है. यू हैव टू. केवल कृष्ण, सो नाइस ऑफ यू डियर. सो यू हैव टू रीड आउट. चलिए अभी कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ये बहुत ईजी था. अभी आगे हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे. वी हैव टू फिनिश टुडे. आई विल गिव यू वेरी लेस टाइम. चलिए नेक्स्ट वन, सेंटेंस करेक्शन. या कंटेक्स्ट मे बी रिलेटेड टू योर फील्ड. आपके इकोनॉमिक्स, आपके बिजनेस, उस फील्ड का भी हो सकता है और एक कॉमन भी हो सकता है. इट्स नॉट दैट. चलिए रीड आउट कीजिए क्विकली. आई एम गिविंग यू सम टाइम. आई विल ऑल्सो रीड आउट, यू ऑल्सो रीड आउट. Sentence correction is probably the easiest subsection. और साथ साथ अंडरलाइन करते जाएंगे. यस, अंडरलाइन है ना. फंक्शन ऑफ नोइंग योर ग्रामर रूल्स. वर्बल सेक्शन ऑफ द GMAT सॉरी. Who do reading? Please say yes, I have done reading. मुझे पता चलेगा कि आपकी रीडिंग स्किल कितनी जल्दी है. How quickly you can read. You have to underline all this. The Manhattan GMAT sentence, correction guide, Aristotle sentence, correction book. Done, very good. Srishti, I also have done. Srishti done, Saurav done. Okay, so what's the main idea? क्या किसके बारे में? एक जनरल बताना, टाइटल ने एक जनरली बताना किसके बारे में क्या लिखा है ये सारा. What is written? क्या माइंड में आ रहा है after doing fast reading? What's coming in mind? What is coming in mind? Yeah, improving the sentence, quality sentence, correction, grammar rules. शाबाश, ठीक है. ओके, सो चलिए हम क्या टाइटल देंगे इसमें. टाइटल क्या देंगे? सेंटेंस करेक्शन है और GMAT सेंटेंस करेक्शन, हाउ टू गेट बेटर. ठीक है, या फिर GMAT इम्प्रूविंग द सेंटेंस क्वालिटी. ओके, grammar rules. Okay, yeah, it can be your only. ठीक है, it can be your. हाँ, very good, very good. That is. Yes, students, quickly. Now also some students, they haven't done. Very quickly you should do.
Okay, it's a book name. It's a book name. Yes, grammar rules. Okay, the sentence correction of the GMAT is very doable. Doable मतलब believable, thinkable. Knowing your grammar rules and practicing them will ensure success. Identify the best study materials. Study them a few times to ensure you have the rules on your fingertips. Some reference books that you could use to learn the fundamental of sentence correction are Manhattan GMAT, it's a name sentence correction guide, Aristotle sentence correction book. You don't actually have to learn that many grammar rules for the GMAT. However, the question on the GMAT are very tricky, so you should make sure you have every rule absolutely down cold. There are instances on more difficult problem where you need to assess the meaning of the sentence and what it is trying to convey. When in doubt, go with the answer choice that seems to have the most logical meaning over the one that appears to follow some minute grammar rule the best. Also remember that the answer is definitely incorrect if the meaning of the original sentence is changed. Okay, so this is we can use some conjunctions also while you are joining two sentences like also, moreover, side by side, not only this but also. तो हम इस तरह से join करके we can use all that things. Next we have that India's trade deficit with China. We have summarized this in 4 lines. You just read out this and you can come to the conclusion. Unnecessary data you have to omit. जो unnecessary है आप उसे omit करेंगे. चलिए quickly read कर लेते हैं. India's trade deficit with China increased this in this year, this in the previous financial year. During the April-September period of 16-17, the deficit is this. These are the datas. Increasing trade deficit with China can be attributed primarily to the fact that Chinese exports to India really strongly on manufactured, keeping is negotiating, all that things. इसे देखिए हमें टाइटल दिया India's increasing trade deficit with China. According to the Commerce and Industry Minister Nirmala Sitharaman, India's trade deficit with China has risen by this million since the last financial year, reaching a figure of this. ये as it is figure we have just taken out from this. देखिए इसमें last year इस तरह से दे दिया. They didn't write the data. She contributes this to the imports made by the telecom and power sector. To bridge this gap, efforts are being made to enhance the overall exports by diversifying the market, emphasizing on various services and manufactured goods. You have to remove lot of idioms and proverbs. कुछ एक आधा आप यूज़ करें, इट्स ओके. अदरवाइज उस idioms को रीड कीजिए, उसका मीनिंग निकालिए एंड राइट डाउन द मीनिंग ऑफ दैट एज इट इज़. वो हमें नहीं लिखना है. कोई 1 2 इट्स ओके, बट यू जस्ट ट्राई टू टेक आउट द मीनिंग एंड राइट आउट दिस. ओके, so this is your homework. Also I am giving you another exercise. You read out and you just press this. Main ideas and title India China trade relation. Yeah, that's totally up to you. Very nicely. You're not to do cheat. अच्छा वो ये लिख रहा है, मैंने ये लिखा है तो मेरा गलत होगा, नहीं. उसको रीड करके आपके माइंड में जो आइडियाज़ आए हैं, आपके अकॉर्डिंग जो फैक्ट्स हैं, आपके अकॉर्डिंग जो टाइटल है, दैट इज़ ऑल्सो अप्रोप्रिएट. इट्स नॉट अ मैटर कि वही टाइटल है, एक ही टाइटल है, वही ठीक होगा. ऐसा कभी भी नहीं है. ओवरऑल वट title you want to give, that is accurate, and what are the main ideas you want to mention, you just how you precise that things, that is also great. अपने according just you have to keep this thing in your mind. Words should not go beyond. जो हमारे वर्ड्स हैं वो 1/3 होने चाहिए. सेंटेंस स्ट्रक्चर करेक्ट होना चाहिए, नो ग्रामेटिकल मैनर, और कोई भी स्टेप छूटना नहीं चाहिए. और हर एक चीज़ को जितना प्रिसाइज कर सकते हैं, जितना हम छोटा करके लिख सकते हैं, वी जस्ट राइट डाउन. ओके स्टूडेंट्स,
So this was press writing. I hope you understand. So all the parts just we are going to do, that is reading writing skill. So in this way, earlier we did comprehension, not making and to depressive writing. So you have to focus on रीडिंग स्किल, हम कितना हरीली उसे रीड कर पाते हैं. यू जस्ट अंडरलाइन द मेन फैक्ट्स एंड अननेसेसरी वी हैव टू ओमिट. और उसके बाद हम उसकी किस तरह से समरी और प्रेसी लगभग सेम ही है, बस इस प्रेसी में टाइटल है उसमें नहीं है, 1/4 है 1/3 है, दैट इज़ ओनली. सो लगभग ऑल जस्ट थिंग्स लाइक दैट, सब लगभग एक ही जैसे हैं. So please focus on that. I hope you understand. So do practice also. Thank you. Have a nice day.